थर्ड एडजस्टमेंट हमारा फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इस पे भी हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस के आइटम्स को नलीफाई करते हैं बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपका ये एडजस्टमेंट और एग्जिस्टिंग गुडविल वाला का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करके गुडविल अकाउंट को, और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस के आइटम्स को क्रेडिट कर देना। फिर हमने नेक्स्ट देखा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो इसके साथ ही देखा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाला। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का क्या मतलब है, ये मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे, जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जब प्रॉफिट होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं, जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। प्रॉफिट कब होता है, जब एसेट में इंक्रीज होता है या फिर जब लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है, तो इन दोनों केस में हमें प्रॉफिट होता है, इसलिए प्रॉफिट के नीचे लिखा हुआ है। और उस केस में एसेट को हम डेबिट करते हैं और लाइबिलिटी को भी डेबिट करते हैं। कौन सी एसेट को डेबिट करते हैं, जो इंक्रीज हो रही है। कितने से डेबिट करते हैं, जितने से इंक्रीज हुई है। लाइबिलिटी को भी हम डेबिट करते हैं उतने अमाउंट से जितने से लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है। और अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम इन दोनों को क्रिएट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है लॉस। राइट। ये करने के बाद जो हमारा नेट लॉस आता है या नेट प्रॉफिट आता है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। उस केस में हम रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब हमें नेट लॉस है, उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। इस तरह से हम ये तीन जर्नल एंट्रीज पास करते हैं रिवॉल्यूशन के लिए। पहली रिवॉल्यूशन लॉस के लिए है, जहां पे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें मिल रही है। रिवॉल्यूशन अकाउंट को हम क्रिएट करते हैं प्रॉफिट के लिए, कि अगर एसेट में इंक्रीज हुआ है तो, या लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है तो, या कोई हमें अनरिकॉर्डेड एसेट मिली है तो उसके लिए। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस, उसके लिए या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है अपन रिवॉल्यूशन जो ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में चला जाता है। दिस इज हाउ वी पास द थ्री जर्नल एंट्रीज फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके बाद हमने एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के बारे में बात की थी, जहां पे जनरल रिजर्व आता है, जिसको हम कंटिजेंसी रिजर्व या रिजर्व फंड भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम फ्री पोर्शन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेते हैं और फ्री पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लेते हैं। तो ये तीन रिजर्व हमारे यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा अगर क्रेडिट बैलेंस का पीएनएल अकाउंट दिया है आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, तो वो सरप्लस होता है, वो भी यहाँ पे आता है। ये चारों आइटम मिला के हमारे एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहलाते हैं। इनको हम पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्रिएट होती है, मतलब बढ़ जाती है, और इन आइटम्स को हम डेबिट कर देते हैं ताकि ये बुक से हमारे चले जाए। क्योंकि इन सारे आइटम्स का हमारी बुक्स में बैलेंस क्रिएट चल रहा है, तो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, इससे वो जीरो होगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई। सो दिस इज हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट undistributed profits among old partners in their old profit sharing ratio. Alternatively, what we can do if a question specifies not to distribute any item of any of these four, then for that item we do not pass this entry, but we pass the entry that is gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. And for this entry, the amount is taken as item of accumulated profits multiplied with respective gain. This is debited, and item of accumulated profits multiplied with respective sacrifice. That is for creating sacrificing partners capital accounts. Got this, guys? इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक आप लोगों को समझाया था। WCR एंड रिवैल्यूएशन, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन और रिवैल्यूएशन में एक साथ कुछ हो सकता है। दैट इज व्हाट वी आल्सो सॉ विद एन एग्जांपल, एंड देन IFR and revaluation, that also we saw with an example. So this is how, guys, we have seen all the five adjustments which may be there in case of admission of a partner. The same five adjustments you will find in retirement as well as in death of a partner.
That is why these five adjustments are very important across these two chapters, admission and the other chapter is retirement and death. Besides, you may also be asked questions on change in profit sharing ratio, where there is no admission, no retirement, no death. Only profit sharing ratio of existing partners change. राइट, तो उस केस में भी ये फाइव एडजस्टमेंट्स हमको काम में आते हैं. तो चाहे एडमिशन का केस हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, उन सारे केसेस में ये पांच एडजस्टमेंट्स आपको पता होने बहुत जरूरी है. गॉट दिस पलक? Yes, पलक, आर sir. यू देयर विद अस? ओके. Yes, sir. Now guys, I am doing a full-fledged question, and with that I will also explain you capital adjustments. So guys, in this example, we have two partners sharing profits and losses in 3:2. Their firm has been incurring losses for many years. ए और बी की फर्म काफी सालों से लॉस बियर कर रही है, तो उन्होंने सी को परसुएट किया जो अपना बिजनेस अलग करता है, सेम काइंड ऑफ बिजनेस करता है वो इंडिविजुअली, और उससे बोला कि 2/5 शेयर के लिए आप हमारी फर्म को ज्वाइन कर लो. राइट? सी एग्रीड. ए और बी की फर्म में क्योंकि लॉसेस चल रहे हैं इसलिए वहां पे गुडविल नहीं हो सकती. Goodwill was valued at 40,000, whereas A and B do not have any goodwill. It means the goodwill that has been valued here is not of A and B, but it is of C. ये C की goodwill है, right? C brings in capital of rupees 50,000. We have to pass necessary journal entries. ये बिल्कुल उल्टा केस है guys. यहाँ पे नया पार्टनर जब किसी फर्म में आता है तो फर्म के लिए गुडविल लेके आता है, मतलब गुडविल का शेयर लेके आता है, क्योंकि जिस फर्म को वो ज्वाइन कर रहा होता है उसमें गुडविल होती है. लेकिन यहाँ पे सी जिस फर्म को ज्वाइन कर रहा है उसमें गुडविल नहीं है, बिकॉज दैट फर्म हैज बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर मेनी इयर्स. Rather, C has goodwill which he is bringing in the firm. Means because of C's admission with A and B, now A and B will get benefited instead of C. Usually what happens is that new partner who is admitted, he gets benefited with the goodwill of the existing firm, with the goodwill of the firm which he is joining. But here it is not so. Concept समझ में आ रहा है आप लोगों को? Palak, have you understood this? Yes, sir. कैसे करेंगे इसको बताइए. ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पहले आप लोगों को. One entry you can easily pass for the capital brought in by C. Cash account debit to C's capital account. We have to pass journal entries in the books of the firm of A and B. So one entry we can pass for capital, right? C will not bring any premium for goodwill. Why? Because जिस फर्म को वो ज्वाइन कर रहा है उसमें तो गुडविल है ही नहीं, तो फिर वो क्यों लेके आएगा. यहाँ पे उल्टा ए और बी कंपनसेट करेंगे सी को, बिकॉज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हियर इज सी एंड नॉट ए एंड बी. ए एंड बी आर रेदर द गेनिंग पार्टनर्स. ये समझ में आ रहा है? So A's share in goodwill of the firm of C, which now is becoming goodwill of the firm of A, B, and C, is. अब इसके पहले हमको देखना पड़ेगा ए का शेयर कितना है. सो एज न्यू शेयर इज हाउ मच? Remaining profit
after giving 2 by 5 to C is 1 minus 2 by 5, that is 3 by 5. A को सी को कितना शेयर दिया है फर्म में 2/5, तो सी को देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 1 माइनस 2/5 प्लस 3/5। अब इस 3/5 के शेयर को ए और बी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, मीन शेयर करेंगे। सो ए शेयर वुड बी 3/5, that is here from here 3/5 of 3/5, that is 9/25, and B share is 2/5 of 3/5, that is 6/25. इतना नोट। So now A share in goodwill of the firm of A, B, and C, and where the goodwill has been brought in by whom? C. And goodwill of C is 40,000. So in that 40,000 into 9/25 is A's share. Am I clear or not? That is how much? 2,500 means 400, 1,600, 9, 14,400. And B share is 40,000 into 6/25. That is 400, 1,600, 9,600. Right? C share is how much? 40,000 into 2/5. That is 16,000. Clear or not? C sacrifice in goodwill. हमको C का शेयर नहीं निकालना है यहाँ पे गाइस, हमको C का sacrifice निकालना है in goodwill for A and B. And how much he's sacrificing is 40,000 to 3/5. That is 24,000. C is getting how much in this goodwill? Now see, earlier C was enjoying this entire goodwill. Now he would be getting only 2/5 of this goodwill. So how much he is sacrificing for A and B is 3/5 of goodwill. And 3/5 of goodwill is 24,000, which is nothing but total of 14,400 and 9,600. Am I clear? So first journal entry here would be cash account debit to C's capital account with 50,000, and second entry would be A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account with 14,400, 9,600, and 24,000.
So partners who gained in C's goodwill compensated to C in their gaining proportion. And the gaining proportion are 9 by 25 and 6 by 25. I hope you have understood, guys. Note down this all. Clear? Have you understood this, Palak? Yes, Yes, sir. sir. Note it down, Chirag. Understood this? हाँ राइट उनकी गुडविल क्योंकि उनको मिल गई है सी से इसलिए वो उसको कंपनसेट कर रहे हैं सी को एंड फॉर दैट दे आर डिक्रीजिंग देयर ओन कैपिटल एंड इंक्रीजिंग द कैपिटल ऑफ सी. Note down this next example, guys, in case you are done with this. Palak, you have to relog in once the meeting gets over, right? Okay, sir. Your maths paper is on 9th or on 8th. Which date it is? Ninth. Okay. Noted down all these 6 points even, right, guys? Palak, noted down everything till here. चिराग लिख लिया आपने? So, guys, in this question, there are two partners A and B in the ratio of 2:3.
Their balance sheet of 1st April 2023 is given to us here. On this date, they have admitted C for 1/5 share in profits, and because of C's admission, A's profit share has increased by 1/5. What do you understand with this? क्या समझ में आता है इस लाइन से? जल्दी बोलिए फटाफट भेज. हाँ हाँ. A is also gaining 1/5 apart from C, who is gaining 1/5. It means B is sacrificing 2/5. 1/5 plus 1/5. B is sacrificing how much? 2/5. Out of which 1/5 he is giving to C and 1/5 to A. Right? C brings in capital of rupees 30,000 and rupees 3,000 for his share in goodwill of the firm. In balance sheet, guys, we have accumulated profits. We have accumulated loss. We do not have existing goodwill here appearing anywhere. We already have information about newly valued goodwill for which C is bringing his share, that is 3,000. And we also have information about revaluation of assets and liabilities. So starting with working notes, guys, please do not write anything. Just understand, and later I will allow you to note down everything together. Do not write anything as of now, guys, right? So A's gain is 1/5. C's gain is equal to his share in profits is 1/5. It means B's sacrifice. B was getting earlier 3/5, out of which 1/5 he has given to A and 1/5 to C. So 3/5 minus 2/5, that is 1/5, is B's. Okay, this is B's sacrifice is 1/5 plus 1/5, that is 2/5. And B's new share in profits is 3/5, which he was getting earlier, and he has sacrificed in totality 2/5, so his new share is 1/5. समझ में आ रहा है ये आप लोगों को? And A's new share is, earlier he was getting 2/5, now he has got 1/5 more from B, so now his share is 3/5. So new profit sharing ratio, though we do not require this in this question as of now, but this we will require when I extend this question further to make you understand about capital adjustments. That is why I'm calculating this here as of now, right? So new profit sharing ratio of A, B, and C is 3/5 is to 1/5 is to 1/5. That is 3 is to 1 is to 1. Right? Now here we have been given, guys, C share in goodwill of the firm, rupees 3,000.
And this is calculated as goodwill of the firm multiplied with C's share in profits. So C share in goodwill of the firm given to us as 3,000. Goodwill of the firm we do not know, but we know C share, that is 1 by 5. So goodwill of the firm is 3,000 to 5 by 1, that is 15,000. I hope you have understood, guys. 1 by 5 when goes to this side, it will get multiplied with 3,000 will become 5 by 1. So firm's goodwill is 15,000. We have calculated firm's goodwill to pass the entry for goodwill of the firm, right? So which entry we will pass for goodwill of the firm here? Right, gaining partners capital accounts debit to sacrificing partners capital account. This is what we will pass. So our first journal entry would be for the capital brought in by C, and that is rupees 30,000. So cash account debit to C's capital account to premium for goodwill account. The total amount came in the business as 30 plus 3, that is 33,000. The next entry we will debit premium for goodwill account. We will also debit gaining partners capital account, that is A, and will credit sacrificing partners capital account, that is B's capital account. Premium for goodwill would be debited with the same amount with which it was credited in the previous entry. A's capital would be debited with goodwill of the firm into A's gain, that is 3,000. B's capital would be created with goodwill of the firm into B's sacrifice, that is 2 by 5, means 6,000. This is what we will do in the second entry, guys. Have you understood this? So इस तरह से नए पार्टनर सी ने और गेनिंग पार्टनर ए ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बी को कंपनसेट कर दिया. सॉरी, बी, क्योंकि बी सैक्रिफाइस कर रहा है सिर्फ. नहीं, सी को भी दिया है ना. सी को कैसे मिलेगा शेयर? ए को तो मिला है, इन्होंने सैक्रिफाइस कुछ किया नहीं. ए को तो 1/5 मिला है. सी को कितना मिला है जब नया फर्म में आया? वो तो कितना मिला फर्म में जब एज अ न्यू पार्टनर आया तो 1/5 मिला. तो उसको किसने दिया फिर? तो बी नहीं दिया, राइट? Gaining partners compensated sacrificing partner in their gaining proportion. This would be the narration for it. Who is the gaining partners? A and C. And the sacrificing partner is B. In the third entry, guys, we will pass entry for, we will do adjustment for accumulated profits, or we can do it for accumulated losses. I am going in the same sequence in which I have explained you all the adjustments. So the first adjustment was for newly valued goodwill and for new partners capital. For that, we have already passed the two entries. The second adjustment that I explained you was for existing goodwill, but in this balance sheet, there is no existing goodwill in the asset side at all.
एक्सेस गुडविल नहीं है यहाँ पे. Third adjustment that I explained you was for accumulated losses. So in accumulated loss, we have one item that is advertisement expenditure. So this we need to write off, for which we will credit advertisement expenditure and will debit old partners capital accounts. So A's capital account debit, B's capital account debit to advertisement expenses account. Amount of advertisement expenses was 2000. This will go to the partners in their old profit sharing ratio 3:2, that is 1200 and 800. Sorry, 2:3 days. Okay. So 800 and 1200. Written off advertisement expenditure by debiting old partners' capital accounts, capitals in their old ratio 2:3. Fourth one is for accumulated profits and also for revaluation of assets and liabilities together. Here we have general reserve and P&L account, that is surplus, as undistributed profits. But the question says that general reserve is not to be distributed at all. So for general reserve, we will pass the entry that is gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. रिजर्व एंड सरप्लस का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता उसके लिए हम एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे गेनिंग पार्टनर हमारे दो हैं, ए और सी. उन दोनों ही कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और बी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे with the amount of general reserve multiplied with respective sacrifice and gain. General reserve amount is 15,000. So 15,000 to gain of A, that is 3,000, and the same is for C. And 15,000 into respective sacrifice of B, that is 2 by 5, means 6,000. Gaining partners compensated sacrificing partners for general reserve in their gaining proportion. This is our fourth entry. ये समझ में आई आप लोगों guys? Sure. Palak, have you got this? Yes, sir. The fifth entry will pass for that item of accumulated profit which is to be distributed, that is P&L account. Here the balance is 5,000. So this 5,000 will go to old partners in their old ratio. Amount was, so 2,000, 3,000 will go to old partners. Got this, guys? The sixth entry is for revaluation of assets and liabilities. First entry is for revaluation loss, where we debit revaluation account, and that loss is, the loss occurs either because of decrease in asset or increase in liability. Furniture is to be depreciated to 80%. मतलब फर्नीचर को डेप्रिशिएट करके उसकी बुक वैल्यू के 80% तक लेके आना है और फर्नीचर की बुक वैल्यू है 18,000. इसका 80% होता है 14,400. मतलब 18,000 से उसको नीचे लाके 14,400 तक लाना है. इसका मतलब 3,600 रुपीज से उसको हमें डेप्रिशिएट करना है. ये समझ में आया आप लोगों को? और एसेट को डेप्रिशिएट करना मतलब क्रेडिट करना. सो वी विल क्रेडिट हियर फर्नीचर अकाउंट
with 3,600। उसके बाद ट्रेडमार्क की मार्केट वैल्यू 0 है, इसको भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, 5,000 रुपए से कम करना पड़ेगा क्योंकि 5,000 इसकी वैल्यू है, बुक वैल्यू, और मार्केट में इसकी वैल्यू 0 है। सो वी विल क्रेडिट ट्रेडमार्क। स्टॉक can be sold for rupees 49, stock value is appreciating, it's a profit, so we will not take this in our loss entry क्योंकि हम लॉस वाली एंट्री कर रहे हैं रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करके। बेड डेट्स 2500 रुपीज के हैं, सो फॉर दिस वी विल रिड्यूस अवर डेटर्स, it's a loss, and then we have to make provision for doubtful debts at the rate of 20% of debtors। 2500 के डेटर्स लेस करने के बाद डेटर्स हमारी बुक्स में हो जाएंगे 13,500 के। 13,500 का 20% मतलब कितना हो गया, 2,700। तो हमारा प्रोविजन 2,700 का होना चाहिए। अभी कितने का है, 3,000 का। तो प्रोविजन को हम 300 रुपए से कम कर सकते हैं, या फिर प्रोविजन को पूरे 3,000 से कम कर दो और उसके बाद नया प्रोविजन बना लो 2,700 से। दो में से कुछ भी आप कर सकते हो। प्रोविजन बनाना मतलब लॉस है, तो वो लॉस भी हमारा आ जाएगा, लेकिन अगर हमें प्रोविजन, अगर हम नेट वाली साइड से करें इसको, तो प्रोविजन हमें कितना होना चाहिए, 2,700। तो 300 रुपए से हमें प्रोविजन को कम करना है, तो वो हमारा गेन है, सो दैट आई एम नॉट रिकॉर्डिंग हियर। सो वी हैव लॉस इन केस ऑफ फर्नीचर, ट्रेडमार्क, डेटर्स, एक्रूड रेंट 3,000 रुपीज का है, लेकिन मार्केट में उससे मिलेंगे सिर्फ 1,000 रुपीज, तो इसमें भी हमें लॉस हो रहा है। अनपेड कमीशन इज रुपीज 6,000, यहाँ पे दिख रहा है 5,000, तो यहाँ पे भी हमें लॉस हो रहा है, लाइबिलिटी की वैल्यू 1,000 से बढ़ रही है क्योंकि एक्चुअल अनपेड कमीशन है 6,000, पर बुक्स में अनपेड कमीशन दिख रहा है 5,000। हमें अनपेड कमीशन को भी बढ़ाना है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है, मतलब ये भी लॉस है। सो एक आइटम है हमारा ट्रेडमार्क, दूसरा है डेटर्स, तीसरा है एक्रूड रेंट, चौथा है आउटस्टैंडिंग कमीशन। एक इलेक्ट्रिसिटी 7 पॉइंट का इसमें समझा रहा हूं आपको यार, डिस्कस कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक बिल है 300 रुपीज का, जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, इट वॉज ओमिटेड टू बी अकाउंटेड। So now we will account it, and with that our liability will increase by 300. That would be called outstanding electricity expenses. Increase in liability is a loss, so this also would be recorded there in our first entry of revaluation. And receipt of commission of which 300 was mistakenly added to creditors. 8th वाले पॉइंट से क्या समझ में आता है, कोई बताइए मुझे। What do you understand from the 8th point? कमीशन 300 रुपए का हमें मिला था, वो गलती से क्रेडिटर्स में इंक्लूड हो गया है, इसका क्या मतलब हुआ। हम्म। कमीशन क्या था हमारे लिए, हाँ, रिसीव हुआ है ना, तो क्या है वो, व्हाट वाज दैट, एक्रूड रेंट। आउटस्टैंडिंग कमीशन एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। हाँ, कमीशन हमारी इनकम थी, पर हमने उसको इनकम में क्रेडिट करने के बजाय क्रेडिटर्स में क्रेडिट कर लिया, मतलब हमने अपना इनकम नहीं दिखाई, इनकम दिखाते तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब हम प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिटर्स में से कम करना है तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे। सो दैट इज एक्चुअली अ गेन फॉर अस, राइट। ट्रेडमार्क की वैल्यू कितनी है, 5,000। डेटर्स कितने से कम करने हैं, बेड डेट्स इज
2500. Accrued rent is जो नहीं मिलेगा 3000 है 1000 ही मिलेगा. So 2000 का में accrued rent कम हो रहा है. Outstanding commission is 1000 से increase हो रहा है. और outstanding expenses are 300. So with this our total loss is 8, 10, 12, 13, 14, 100 and 14, 400. ठीक है guys? Revalued various assets and liabilities. This is our sixth entry. The seven entries where we have gain. So gain we have in case of land and building. We have in case of PFDD. We have in case of stock. Correct. We have in case of creditors. So our seven entry would be where we will debit land and building account, stock account, provision for doubtful debts account, and creditors account. Two, revaluation account. Land and building is to be appreciated to rupees 1,20,000. 1,20,000 तक उसको appreciate करना है. अभी book value 85, मतलब 35,000 से हमको increase करना है. स्टॉक मार्केट में बिकेगा 49,000 रुपीज से, तो हमें 14,000 से उसको इंक्रीज करना है. So 35 and then 14,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 300 से हमें कम करना है. क्रेडिटर्स में से 1000 कम करने हैं कमीशन के. सो टोटल गेन है 49, 50,000, 300. Narration would be same, that is revalued various assets and liabilities. Is it clear guys or not to everyone? कमीशन 300 है. ओके. ओके 1000 का वो आउटस्टैंडिंग कमीशन था. ठीक है. So this 50,000, 49,000, 49,600, right? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्रिएट किया 49,600 से. इसका मतलब क्या हुआ? क्या है ये हमारे लिए? प्रॉफिट. और रिवैल्यूएशन हमने डेबिट किया 14,400 से, मतलब हमें लॉस हुआ. तो नेट आप देखें तो 49,600 माइनस 14,400 मतलब 35,200 का हमें प्रॉफिट हो रहा है. इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे ताकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारी बुक्स में क्लोज हो जाए और वो प्रॉफिट चला जाए ओल्ड पार्टनर्स को. तो उसके लिए हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करके बढ़ा देंगे. कितना हो रहा है? 35,400, राइट? या 35,400. दिस विल, सॉरी क्या बोल रहे हो? 600 और 400, ठीक है 200, राइट. 35,200. ये कितना हो गया? डिवाइड बाय 10 इज 3520, so 5 is 7,040.
7,040 into 3 means 21,120 and 14,080. तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि 2:3 का रेशियो, राइट? So 1480 will go to A and 21,020 will go to B. Net profit upon revaluation credited to old partners in their old ratio 2:3. आया यहाँ तक समझ में कैसे आप लोगों को? तो हमने यहाँ पे रिवॉल्यूशन की भी एंट्रीज कर दी हैं। हमने इस क्वेश्चन में कौन कौन से एडजस्टमेंट्स देखे हैं? एक तो हमारा न्यूली वैल्यूड गुडविल और नए पार्टनर की कैपिटल का, वो ये पहला था। दूसरा हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस का है। तीसरा हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का है। ये उसके लिए दो एंट्रीज हैं, एक जिसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना और दूसरे जिसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर 6, 7 और 8 हमारी रिवॉल्यूशन की एंट्रीज है। सो आउट ऑफ 5 here we have 4 adjustments. Which adjustment we do not have is of existing goodwill. अब इसके बाद हमें बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। सो वी विल मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट 6th एंट्री में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखे थे वो सारे अकाउंट्स यहाँ पे भी आ जाएंगे। So they will go on the debit side of revaluation account. With their respective amounts, that is and this side we will have items which were debited and revaluation account was created. So now the profit is 35,200. That would be divided among the partners, for which we'll write by partners capital accounts. A has got 14,080 and B has got 21,120. This is how the total profits of 35,200 have been distributed among the two partners. The total here was 49,600. The same total will be written on the debit side. इस तरह से रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारा खत्म हो गया और ये हमारा प्रॉफिट है जो रिवॉल्यूशन पे हुआ, जो पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर गाइस? यहाँ तक लिखिए स्टार्टिंग से। हमको इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज और रिवॉल्यूशन अकाउंट ही करना था। दैट इज व्हाट वी हैव डन।
I have not written here, guys, narration of this. I think you know this, right? Cash brought in by C for his capital and for his share in goodwill of the firm. That would be narration for entry number one. चिराग आपने लिख लिया सब कुछ यहाँ तक, राइट? चिराग, शुभ दृष्टि, हाँ, सिक्स, फिफ्थ. Note down revaluation account also, guys. Guys, this was our example number 7. Now note down example number 8, guys. All.
लिखा कैसे था आप लोगों ने? सो गाइस जो 5 एडजस्टमेंट्स हमने देखे थे कल तक, और आज इस क्वेश्चन में उन 5 में से हमने 4 एडजस्टमेंट्स को अप्लाई किया है, एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग गुडविल। उसके अलावा आपको कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं एडमिशन के क्वेश्चंस में। देयर मे बी any of the two capital adjustments in one question of admission, right? This is one of them. हम क्या देख रहे हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट देख रहे हैं। सो कैपिटल एडजस्टमेंट में एक चीज ये होती है कि ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और वो एडजस्ट करने के लिए या तो वो नेसेसरी कैश लेके आते हैं फर्म के अंदर, या फर्म से ले जाते हैं। कैपिटल को एडजस्ट करना मतलब कैपिटल को कम या ज्यादा करना। अगर कैपिटल को ज्यादा करना है तो उनको कैश लाना पड़ेगा फर्म के अंदर। अगर कैपिटल को कम करना है तो फर्म से वो कैश लेके चले जाएंगे, मतलब ले जाएंगे। दूसरा तरीका है कैपिटल को एडजस्ट करने का कि अपने करंट अकाउंट में आप, अगर कैपिटल आपको अपनी कम करनी है तो जितना कम करना है उतने से करंट अकाउंट में आप क्रिएट कर दो कैपिटल को डेबिट कर दो। और जितने से कैपिटल अगर बढ़ानी है तो आप करंट अकाउंट को डेबिट कर दो और कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर दो। कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना मतलब कैपिटल को बढ़ाना, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना मतलब कैपिटल को कम करना। सो दिस इज द अदर वे through which partners can adjust their capitals. How? By opening their current accounts. Any of these things may be given to you in a question of capital adjustment of this kind. Am I clear? तो आपको एक एडमिशन के क्वेश्चन में उन 5 एडजस्टमेंट्स के अलावा ये भी पूछ सकते हैं। एक एडजस्टमेंट और है कैपिटल वाला। कैपिटल के 2 एडजस्टमेंट्स होते हैं, उसमें से एक मैं आपको एग्जांपल 8 में बता रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल 9 में बताऊंगा, ताकि हमारा एडमिशन चैप्टर आज पूरा खत्म हो जाए। ये समझ में आया आप लोगों को? अभी 8 वाले एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि पुराने पार्टनर्स को नए पार्टनर की कैपिटल और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना है, या तो कैश लाके या करंट अकाउंट को ओपन करके, राइट? तो पहले हम ये पता करेंगे कि पुरानी पार्टनर्स की कैपिटल, वो सारे एडजस्टमेंट्स 5 जो हमने किए हैं, मतलब 4 जो किए हैं, उसके बाद कैपिटल कितनी आ रही है। एंड फॉर दैट वी नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये समझ में आया आप लोगों को ऐसे नहीं आया? Wrinkle? Yeah, good evening. Tell me. Yeah, I'm in class right now, Hunar. I just give you call once I get free, right? It will take maximum half an hour, right? Yeah, yeah. Okay.
Very first thing that we do guys is we write capital balances of A and B, which is given to us in the balance sheet, and that is 52,000, 55,000, if I'm not wrong. Just check the balance sheet. 55 and 52. Okay, right? Now all the journal entries in which capital accounts are involved would be posted here. So here on the credit side of C's capital, we will write buy cash account with 30,000 rupees. हम सी के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो सी कैपिटल में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश विद 30,000 with the amount of capital. In the next entry, we have debited A's capital and credited B's capital. So on the debit side of A's capital, we will write to B's capital with 3,000. And on the credit side of B's capital, we will write buy A's capital and buy premium for goodwill with 3 and 3 respectively. So पहले A के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिख रहा हूं टू B's capital account with 3,000, and now here buy premium for goodwill account and buy A's capital account. Got this guys? इस तरह से हमने बी कैपिटल को 6,000 से क्रेडिट कर दिया और ए की कैपिटल को 3,000 से डेबिट कर दिया. In the third entry, we have debited A's and B's capital. On opposite side, we have advertisement expenses. So on the debit side of A's and B's capital, we write two advertisement expenses with 800 and 1,200 respectively. So two advertisement expenses account 800 and 1,200 and nothing for C. After this, on the credit side of B's capital, we write buy A's and buy C's capital with 3 and 3. And here we will write to B's capital account. A's capital would be debited with 3 and C's capital would be debited with 3. Right? पोस्टिंग समझ में आ रही है सबको अच्छे से? दृष्टि? यस, हूं नहीं. हूं हम घर में और पर्सनली बोलते हैं. राइट? स्टैंड अप कॉमेडियन आता है रवि गुप्ता. सुना उसको? सुनना उसका. ऑफिस वाला एक है, उसमें बताता है इस बारे में. Somebody was writing an office mail who. Okay, on the credit side of A's capital and B's capital, we write by P&L account 2,000 and 3,000.
Palak, you are with us, right? Yes, sir. 2 and 3 has gone to the old partner. Then we have revaluation profit or loss. That is profit 1480 and 2120. So now, since we have posted all the entries in which capital accounts are involved, we will calculate capital balances, especially of A and B, for which we'll do the total of the credit side, that is 57 and 71,080, and here 55, 58, 61, and 667, 67, and 88,120, and here 20,000. The same we will write here. So here the balance of base capital is 6,000, that is 65, 64,280. And here we will have 87, so 86, 120, 80, 920. And here 27,000. Make this guys fast. शुभ जल्दी में तो नहीं हो, समझ में आ रहा है ना सब? पक्का? Done everyone? Palak, have you made this capital account? Yes, sir. So we have to change capitals of A and B on the basis of C's capital. C has brought in capital of 30,000 rupees. The new profit sharing ratio is 3 is to 1 is to 1. C has brought in capital of 30,000 for 1 by 5 share. So for 3 by 5 share, A's capital should be 30,000 into 3 by 5 into reciprocal of 1 by 5, that is 5 by 1. That is 90,000. I hope you have understood, guys. 1 by 5 शेयर के लिए सी कैपिटल 30,000 थी, इसलिए 3 by 5 के लिए ए की कैपिटल होनी चाहिए 90,000. अभी उसकी बुक्स में कैपिटल है 64,280, होनी कितनी चाहिए 90,000. यही एडजस्टमेंट हमें करना है जो यहाँ पे लिखा है उस क्वेश्चन में.
इसके लिए ए को नेसेसरी कैश लाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कैपिटल जितनी होनी चाहिए उससे कम है। होनी चाहिए 90, है 64,280। ये हम क्या करते हैं, 30,000 डिवाइड बाय 1/5 करते हैं। तो 1/5 डिवाइड किया तो 5 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। ये बिल्कुल वैसे ही है। 1/5 रुपीज में अगर 30,000 एप्पल आते हैं तो 3/5 में कितने एप्पल्स आएंगे? यूनिटरी मेथड ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? सेम वही चीज है। Similarly, for 1/5 share of B, B's capital should be, इसकी 1/5 के लिए कितनी थी? 30। इसकी भी 1/5 के लिए कितनी होगी? 30। और अभी बी कैपिटल है कितनी बुक्स में? होनी कितनी चाहिए? तो बी फर्म से कैश लेके जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो should be capital of A is 90,000, of B is 30,000. Capital in books as of now of A is 64,280 and of B is 86,920. So A has to bring in capital of how much? Difference of these two, that is 25,720. Right? And B needs to take away capital of, means cash of this much, 56,920. So the additional journal entries here after entry number 8 in example number 8 would be cash account debit to A's capital account. A needs to bring in capital of 25,720. Entry number 10 would be B's capital account debit to cash account 56,920. ये समझ में आया आप लोग गाइस? हाँ, बताता हूँ, एक मिनट। आप लिखिए पहले इतना, मैं बता रहा हूँ। Palak, have you understood this? Yes, sir. लिख लिया आपने? शुभ, लिख लिया ये आपने?
आपको क्वेश्चन समझ में आ गया था ना? वो बोल क्वेश्चन सेज दैट ओल्ड पार्टनर्स विल एडजस्ट देयर कैपिटल्स बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब होता है कि नए पार्टनर की कैपिटल उसके प्रॉफिट शेयर की जितनी है, उस हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल उनके नए प्रॉफिट शेयर के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन आल्सो? Okay, it means A's capital should be how much and B's capital 30. That we have written here. But their existing capital in books is how much? This much 64 280 and 86 920. सारे एडजस्टमेंट के बाद, वैसे तो हमें क्वेश्चन में कैपिटल कितनी दी थी इनकी 55 52, हमको वो नहीं लेना है, हमको सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, सारे मतलब वो 5 एडजस्टमेंट्स के बाद उनकी कैपिटल है 64 280 और 86 920। अगर हम एक ही कंपेयर करें, होनी चाहिए इतनी पर है इतनी, इसका मतलब उसको अपनी कैपिटल कितने से और बढ़ानी है, तो उसके लिए वो कैश लेके आएगा। और बी की होनी चाहिए इतनी पर है ज्यादा, तो बी इतना कैश बिजनेस में से ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? अपनी कैपिटल को कम करके। कैपिटल को कम करने के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। इस यहां हमने क्या किया, बी की कैपिटल डेबिट कर दी, मतलब 56 920 से कम कर दी, और वो कैश लेके चला गया। तो अब उसकी कैपिटल अब कितनी हो जाएगी बुक्स में? 13। अभी ये दोनों एंट्रीज हम पोस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और ए अपनी कैपिटल को बढ़ा रहा है कैश लाके, कितने का? 25 720, जो डिफरेंस हमने यहाँ निकाला। So now these two entries would be posted in capital accounts. So we will reopen capital accounts by writing here by balance brought down. A की कैपिटल है 64 280, B की है 86 920 और C की है 27,000। ये कैपिटल बैलेंसेस हमने यहाँ पे ले लिए गाइस, राइट? इधर देखिए बाद में लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हम एंट्री पास करेंगे, ये वाली, मतलब ये एंट्री को हम पोस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो एक ही कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश 25 720 से। So buy cash 25 720, और बी के लिए हम एंट्री करेंगे, बी कैपिटल को डेबिट करेंगे और लिखेंगे टू कैश 56 920। ये करने के बाद हम वापस कैपिटल बैलेंसेस निकालेंगे पार्टनर्स के। तो यहाँ ये हो जाएगा 90,000 टोटल, राइट? इन दोनों का टोटल 90,000 आ रहा है। ये है 86 920, यहाँ पे है 27। सेम टोटल हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे हम बैलेंस निकाल रहे हैं। तो ए का बैलेंस आ रहा है 90, बी का आ रहा है 86 920 माइनस 56 920, दैट इज 30, और सी का आ रहा है 27। तो अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई? ए की हो गई 90 और बी की हो गई 30, जो हम चाहते थे। That's it. समझ में आया? Yes, sir. गाइस देखिए, यहाँ जो ये जो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट किया है, क्या कि ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं नए पार्टनर कैपिटल और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स ओल्ड और न्यू मिला के ये चाहते हैं कि उनकी कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दिखे। मतलब ए और बी कैपिटल 90 और 30 और सी की 30 दिखे। वो ओरिजिनली सी लाया कितना था? 30। तो 90 30 और 30 किस रेशियो में? 3:1:1 के रेशियो में ही है। पर यहाँ पे कैपिटल हमने 3,000 रुपीज जनरल रिजर्व का हमने सी कैपिटल में से 3,000 रुपए निकाल लिया, राइट? इसलिए कैपिटल कितनी दिख रही है? 27। मतलब यहाँ पे वो पर्पस मीट नहीं हो रहा। तीनों की कैपिटल जो है, सारी चीजें करने के बाद जो क्लोजिंग कैपिटल सारी है, इट इज नॉट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी आपसे कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछा जाए, कैसा कि ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल एडजस्ट करना चाहते हैं नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे, तो नए पार्टनर की जितनी कैपिटल वो लेके आ रहा है, उसके बाद आप उसकी कैपिटल को कभी भी कम या ज्यादा नहीं करोगे, जैसे मैंने यहाँ 3,000 रुपए से किया है। उस केस में
जो जनरल रिजर्व की एंट्री है उसमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय सी के करंट अकाउंट को आपको डेबिट करना है, ताकि उसकी कैपिटल 30,000 ही बनी रहे। तो एंड में 90-30-30 जो उनका पर्पस था कि हमारी कैपिटल एंड में सब कुछ करने के बाद हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हो जाए, वो हो जाएगा वहां। लेकिन अगर आपने कैपिटल अकाउंट, मैंने इसलिए यहाँ पे कैपिटल डेबिट किया क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमें कहीं कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं बोला था। वो तो मैंने इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया है बात। Palak, have you understood what I said? And those who are sitting here, I'm asking. सेम चिराग चीज समझ में आ रहा है क्रेडिट ये? करने को भी लेकर होगी। चिराग समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मतलब जो वो कह रहे हैं ना कैपिटल एडजस्टमेंट, उसका पर्पस ही यही है क्योंकि कैपिटल एंड में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हो जाए, राइट? पर यहाँ पे आपको दिख रही है कि उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल, ये जो कैपिटल दिख रही है 90-30 और 27, ये 3:1:1 उनका जो न्यू रेशियो था उसमें नहीं है। न्यू रेशियो हमने पहले कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था? 3:1:1, उसमें नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जनरल रिजर्व की एक एंट्री जो मैंने पास की, जनरल रिजर्व के लिए गेनिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट किया, उसमें मैंने नए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया 3,000 से, इसलिए उसकी कैपिटल, देखिए ये उसकी कैपिटल यहाँ पे बढ़ी थी कितने से? 30 से। इसके बाद सीधे यहाँ पे 3,000 से कम हो गई, डेबिट हो गई, तो कितनी हो गई? 27। इसलिए नहीं हुआ। राइट, इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस में जहां सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आपको बोला है, इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं बोला था, तो आप कैपिटल अकाउंट ही ले लो यहाँ पे जैसे मैंने लिया। पर अगर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का बोला है तो आपको करंट अकाउंट लेना है। करंट अकाउंट ले लेंगे तो फिर आप सी कैपिटल को डेबिट नहीं करोगे 3,000 से, जो हमने किया। देखिए यहाँ पे सी कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया है, ये सी कैपिटल हमने डेबिट कर दिया 3,000 से, यहाँ लिखा 20 कैपिटल। नहीं आएंगे तो 30 ही रहेगी क्या? शुभ सोच रहा है कब क्लास खत्म और कब मैं भगू यहाँ से अपनी बाइक उठा के। घर ही जाओगे ना? घर ही जाना आज? आज कहीं और मत चले जाना। पलक, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन नाउ? चलिए, इसके बाद का हम कहानी कल देखेंगे, इसमें और कुछ भी देखना था, बट वी विल सी इट टुमारो, राइट?